हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों. Welcome back to your physics class. This side Pooja Sharma, your physics teacher from Cambridge International School, Daswam. I hope you all are fine, healthy, doing well. Anji, today we are going to proceed on with the topic light, the ray diagrams. ठीक है? Kindly open your book, have your book along with you so that you will not face any problem. Ray diagrams are good, easy hai, but if you understand them properly. Good morning, Isha. Good morning, Navjot. Good morning, Mehtab. Good morning, Jasmine. Good morning, Aryan. Anji, in the previous class, we did the concept of reflection and refraction. Good morning, Harshmeet. We are going to carry forward refraction today. Let's do a quick recap for this. Then we are going to start with the topic. सबसे पहले एक recap करेंगे. Quick recap. What is reflection? Reflection is bouncing back of light after striking with any surface. Fine. When refraction is bending of the light when it passes from one medium to another. जब light एक particular medium से strike करके next medium में जाएगी, अगर bounce करेगी, वापस आएगी, we say it is reflection. Fine. But if it moves in the another medium, अपना bend करके पास another medium में move करेगी, then we say it is refraction. तब हम उसको क्या बोल देंगे? Refraction of light. Fine. If it bounce back, reflection. If it bend and move to the next medium, refraction. Okay. Then we did angle of incidence, angle of refraction. Fine. So whatever the angle you want to have, चाहे वो reflection के form में हो, अगर आपके पास ये mirror है, one side polished, light goes strike onto the mirror and bounce back. Fine. So the light which is striking onto the mirror, we say it is the incident ray. And the light which is after striking, which comes back, we say it is the reflected ray. Fine. Where it meets the mirror, here we draw a perpendicular line और इसको हम क्या बोल देते हैं? We call it as normal. Okay. Now angles कैसे बनाओगे? This is your incident ray. This is the normal. इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, this is angle I. That is angle of incidence. Fine. Then this is your reflected ray. This is normal. Reflected ray और normal के बीच में जो एंगल बनेगा, this is angle of reflection. Fine. The angle between incident ray and normal, angle of incidence. The angle between reflected ray and normal, angle of reflection. Fine. Angle of reflection. So this is how we find the angle. On the same way, if you talk about the refracted मतलब ये आपका कोई पाथ है. Fine.
Above you have a different medium. Let's say this is medium 1. Below you have a different medium. Let's say this is medium number 2. You have two different mediums. When the light goes, strike the surface. Like suppose ये पानी है आपका. Fine, this is the surface of the water, the top surface. Now when the light strike onto the surface, तो इसके बाद bend नहीं होगी. अगर मिरर होता तो बेंड हो जाती, यहाँ पे बेंड नहीं होगी, ठीक है ना. तो कहाँ जाएगी? इट क्रॉस द सरफेस एंड मूव टू द अनदर मीडियम. ऊपर कौन सा मीडियम है? एयर. नीचे कौन सा मीडियम है? वाटर. फाइन, इट गोज फ्रॉम एयर टू वाटर. सो व्हेन इट मूव्स इट बेंड. दिस इज व्हाट वी से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. फाइन, अब यहाँ पे एंगल फाइंड करने हैं. ड्रॉ द परपेंडिकुलर. नॉर्मल incident ray with normal will give you angle of incidence. Refracted ray with normal will give you angle of refraction. So this is all what we have done in the previous class. Fine. Today we are actually going to work on to these ray diagrams. So let's begin with that. हाँ जी बच्चा, लेट्स मूव ऑन. हाँ जी बच्चा, है ना. Now we are going to proceed on with TIR, that is total
internal reflection. Fine. CIR, total internal reflection. So, first of all, understand it is made up of three words: total, internal, reflection. पहले इन तीनों words को समझेंगे. The point, the concept is automatically going to be clear to you. ठीक है? सबसे पहले total मतलब सारा, जितनी rays हैं हाँ जी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल मीन्स ओवरऑल, फुल, कंप्लीट. इंटरनल मीन्स इनसाइड. रिफ्लेक्शन you know very well. Fine. So what happen if this is your change in medium? कोई प्लेन नहीं यहाँ पे, कुछ मिरर नहीं है यहाँ पे, एक सिर्फ सरफेस है. ऊपर मीडियम 1 है, नीचे मीडियम 2 है. फाइन. बट light goes, it strike the surface and then it will bend. Definitely bending तो होगी. Fine. Draw it like this. Let's say this is your surface 1, medium 1, this is your medium 2. The light goes, it strike the surface. यहाँ पे normal बनाएंगे और उसके बाद ये ऐसे bend करेंगे. फाइन. ये आपका हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. ये आपका हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल. देखो ये एंगल नहीं बनाओगे. फाइन. एंगल कहां बनेगा? बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे और साथ में दूसरा क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए. फाइन. नॉर्मल एंड द रे, उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आल्सो इन द सेम वे. फाइन. तो ये बन गया. नाउ व्हाट दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन के रिफ्रैक्शन. ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन हो रहा है क्योंकि बाउंस बैक तो नहीं हुई लाइट, इट क्रॉसेस एंड मूव टू द नेक्स्ट मीडियम, है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ है? दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लेकिन नाउ सपोज दिस इज सम एंगल, अगर मैं इस एंगल को इंक्रीज कर दूं, नाउ दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हुआ है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा. गॉट इट? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज किया. अब इसके बाद अगर मैं इंसिडेंट रे का एंगल और ज्यादा इंक्रीज करूं, let's say it reaches till here, the angle of refraction is going to be here, something like this. कहां पे आएगा? यहां पे आ गया. That is on the surface. Got it? When you increase the incident ray to such an extent that your refracted ray is on the surface, अब इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा भी और एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करूंगी, द रिफ्रैक्टेड रे इज गोइंग टू बी इन द सेम मीडियम. इसके बाद मैं थोड़ा सा भी और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करूंगी, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, ये इधर आ जाएगी. व्हाट इट मींस दैट वो मीडियम 2 से किधर एंटर हो गई? अब मीडियम 1 में. The total light which has to be there in medium 2, now it is in medium 1. मतलब refraction is changed into reflection now. Fine. हम कर क्या रहे थे? हम refraction ही कर रहे थे. Fine. But one point we reached after which reflection started. इस point को हम क्या बोलेंगे? Total. Total मतलब सारी की सारी light. इंटरनल मतलब सेम मीडियम में वापस.
रिफ्लेक्शन, और क्या फिनोमिना बन गया यहाँ पे, रिफ्लेक्शन होगी। फाइन, हो क्या रहा था वैसे, रिफ्रैक्शन हो रहा था, बट वन पॉइंट एक ऐसा एंगल आया जिसके बाद लाइट enters in the same medium, which we say it as total internal reflection. I am going to recap this once again, एक बार इसको दोबारा करेंगे। फाइन, उसके बाद अगर कोई डाउट हुआ तो मेरे को बता देना। Let's say this is your surface. चलें, 2 students joined right now, 2-3 मिनट पहले ज्वाइन किया है। I'm going to give the recap of the same topic once again. जिसको नहीं समझ में आया अच्छे से समझ लो एक बार दोबारा। Those who join now, please concentrate. This is your surface. Below the surface is medium 1. Above the surface is medium 2. Fine. The light ray goes and strike. Where it strike, यहाँ पे आप बना दोगे perpendicular, normal. Fine. This is going to be angle of incidence. And when it is going to strike onto the surface, उसके बाद it will enter in the another medium and it will bend. Bending of light होगा ना, so it bends like this. So ये आपका हो गया angle of refraction. Okay. After this, when you more increase the angle of incidence, angle of refraction भी obviously increase करेगा ही करेगा. One angle of incidence is going to be in such a way, angle of incidence, एक angle of incidence ऐसा होगा where this refracted ray, it will be totally onto the surface, surface के ऊपर, perpendicular with the normal. Fine. This is called critical angle. What we call it as? We call it as critical. Critical मतलब वो point जब आपका refracted जो ray है, it is on the surface. इसके बाद अगर आपने थोड़ा सा भी एंगल इंक्रीज किया, it is going to bend in the same medium. ठीक है ना? थोड़ा सा भी अगर और एंगल इंक्रीज होगा तो मीडियम चेंज हो जाएगा। तो ये वो जो एंगल हुआ where it is on the surface, हम उसको क्या बोलेंगे? We call it as critical angle. Got it? Now after this critical angle, हर एक का अपना critical angle होगा। After this critical angle, अगर आप थोड़ा सा भी angle of incidence और increase करोगे, the refracted ray is going to bend in the same medium. मतलब वो reflection वाला phenomena बन जाएगा। Got it? And this is what we say total internal reflection. है ये refraction, यहाँ पे हमने कोई plane, कोई mirror नहीं लिया. Fine. This is on the surface, like you can say water or something like that. जहाँ से आपका ray जो है वो proper pass हो सकता है in the another medium. But you increase the angle in such a way that your refracted it reaches to the normal, जिसको हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल अचीव हुआ। उसके बाद थोड़ा सा भी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा, your refracted ray is going to be reflected. It will be totally inside the same medium. Fine. It can be written in the paper TIR. तो कंफ्यूज मत होना, what is TIR? That is total internal reflection only. I hope I am clear to all of you. We are going to read it from your book as well. But first of all, kindly listen it. Fine, read it once. Diagram check karo which is there on your book. And then we are going to begin with the reading. Take 2 minutes, see the diagram. And if you want to write it in your words, you can go ahead.
हाँ जी बच्चा, I hope you have read once total internal reflection. Let's go with the reading portion. ठीक है, let's read it from the book. Easy है, but एक बार पढ़ लेते हैं ताकि if any word, if any point is not so clear to you, आपको समझ में आ जाए. ठीक है ना? So total internal reflection. When rays of light passes from denser medium to less denser medium, they bend away from the normal. Obviously, denser medium मतलब जहां पे density ज्यादा है, less denser मतलब जहां पे density कम है. We call it as a rarer medium also. ठीक है ना? So अगर rarer medium और denser medium में light जाएगी, obviously it will be bending away from the normal. As the angle of incidence increases, the angle is reached at which the emerging light ray would travel along the surface. That is, the angle of refraction is going to be 90 degree. मतलब वो point, वो angle of incidence जहां पे refraction is going to be on the surface. ठीक है जी? रिफ्रैक्शन लाइन इतनी इंक्रीज कर जाएगी, इतना एंगल इंक्रीज कर जाएगा दैट इट रीचेस टू द सरफेस. तो वहां पे रिफ्रैक्शन का एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री बन गया. एंगल कहां पे होता है? बिटवीन द रे एंड द नॉर्मल. ठीक है ना? तो अगर आपकी रे आ जाएगी ऑन द सरफेस, सो दिस इज द रे एंड दिस इज द नॉर्मल, तो इन दोनों में एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री. The angle of incidence at which the refraction become 90 degree is known as critical angle for the medium. जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आपका रिफ्रैक्शन का एंगल बनेगा 90, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या बोलेंगे? We call it as critical angle. मतलब ये वो एंगल है जिसके बाद the refracted ray it is going to bounce back or bend and enters in the same medium. Bend करेगा और enter करेगा in the same medium. Fine, that is what we say critical angle. At greater angles of incidence, the rays are entirely reflected back inside the medium. अगर हम इस critical angle के बाद जो भी इससे ग्रेटर जितने भी एंगल्स होंगे उसमें क्या होगा? द रे इज गोइंग टू बेंड इनटू द सेम मीडियम. दिस प्रोसेस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. फाइन. Now they are talking about the figure which they have drawn in figure 4.21. The angle of incidence is 2 or 3 degrees less than that of the critical angle. The light is just managing to escape from the glass. The critical angle is C. Critical angle को हम क्या करेंगे? C. It is linked with the refractive index by the formula 1 over sin C is equal to n. So okay. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल क्या था? दिस. नाउ दे आर सेइंग अगर आपको रिलेशन बताना है बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज गोइंग टू बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1 ओवर साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल. इस फॉर्मूला को लिख लो, नोट बना के, और इसको याद रखना. फाइन. Critical angle, suppose it is given, let's say it's given to you as 30 degree or 45 degree or 60 degree. ठीक है ना? तो you can calculate it. Calculator पे press sign, then press the angle 90 degree or 60 degree लिख दो आगे, you get the answer. फिर 1 over कर दो, divide कर दो, 1 divided by that particular number, you will get the refractive index.
हाँ जी बच्चा. Okay. So for window glass, the refractive index is 1.5. Now they have given you the refractive index for different of the things. ज़्यादा इसको if you want to learn it, you can do that. But otherwise, if the question comes like this, it will be given to you in your paper as well. Fine. So for the window glass, the refractive index is 1.5. We find the sin C. देखो अब उन्होंने आपको ये बताया है कि अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, हाउ कैन यू फाइंड आउट साइन सी, मतलब आपको सी फाइंड करना है, ठीक है ना. सो हाउ कैन यू फाइंड दैट? जस्ट पुट द वैल्यूज अकॉर्डिंगली. यस, how you can do that? Let's do it. Let's have it onto the board. This formula we are going to use. ठीक है जी, you have the formula refractive index is equal to 1 over sin c. अब आपको refractive index given है 1.5, तो वैल्यू पुट कर दो 1.5 is equal to 1 over sin c. From here you can have sin c is equal to 1 over 1.5. Got it? Solve कर दो इसको. Sin c you can have it 1 divide by 1.5. 1 divide by 1.5. When you are going to do this, you will be getting the value 0.67. हाँ जी. So 1 divided by 1.5, it's going to be 0.67. कितना आंसर आ जाएगा? 0.67. अब आपको फाइंड क्या करना है? आपको साइन सी नहीं निकालना था. यू हैव टू फाइंड आउट ओनली द वैल्यू ऑफ सी. जिनके पास कैलकुलेटर है वो साथ साथ में प्रैक्टिस करके देख लो. फाइन. सो आपको सी की वैल्यू निकालनी है. सी इज इक्वल टू साइन ऑन द अदर हैंड इज गोइंग टू बी साइन इनवर्स 0.67. ठीक है. एंड व्हेन यू आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज, साइन इनवर्स फिर आगे लिख देना 0.67. यू विल बी गेटिंग इट एज 42 डिग्री. कितना आंसर आ जाएगा आपके पास? 42 डिग्री. दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट इन द एग्जाम एज वेल. ठीक है जी. Those who have the calculators, kindly do it and then let me know आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं.
हाँ जी बच्चा, वेरी गुड ईशा, वेरी गुड दिलप्रीत, वेरी गुड नवजोत। ठीक है बेटा, वेरी गुड। हाँ जी बच्चा, डन, वेरी गुड ईशा। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, नवजोत का ठीक है आंसर। ईशा आपने 2 आंसर भेजे हैं बेटा। हाउ इट इज कमिंग 45? 45 नहीं आ रहा है, नवजोत का आ रहा है 41.8। दैट इज ऑलमोस्ट करेक्ट। आप बेटा एक बार दोबारा इसको कैलकुलेशन करना, ठीक है। दिलप्रीत इज करेक्ट। हाँ जी, सरताज सिंह, साखी, हर्षनीत, योर आंसर्स प्लीज। Do it and send your results. कोई डाउट एग्जिस्ट हो रहा है तो मेरे को साथ साथ में पूछ लो, आई एम देयर टू गाइड यू, लेकिन बताओ सही मेरे को वेयर योर डाउट इज, ओके। कई बार
हाँ जी बच्चा। हाँ जी, दिस इज ऑल अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ बेटा देखो, ये चैप्टर थोड़ा सा आपका लेंथी है, बट द चैप्टर इज वेरी गुड, ठीक है। एंड इट्स स्कोरिंग एज वेल, बिकॉज इसमें से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। यू कैन हैव मोर, बट एटलीस्ट वन यू विल डेफिनेटली हैव, ठीक है ना। चलिए, सो टुडे वी हैव डन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। एंड वी डिड द न्यूमेरिकल आल्सो बेस्ड अपॉन दिस। Kindly read it out. Next is your homework, and the homework is that optical fibers topic. You are going to do it. ठीक है, इसका रीडिंग आप करोगे। We are going to begin from the next topic, that is thin converging lenses, जिसमें हम रे डायग्राम्स करेंगे, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर्स वी डिस्कस इन द क्लास, बट इसका अच्छे से रीडिंग आप खुद करोगे एक बार। दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क, फाइन। It's not that we don't discuss. Yes, we are going to do that. But theory portion है, तो एक बार आप इसको read out जरूर करोगे. Fine. Okay, जी. Till here, if you have any doubt, please send a message. If there is no doubt, you can just send that, ma'am, no doubt, it's all clear. Then only we are going to wind up the class. Kindly send message. See your book once. Take 1-2 minutes. We are left up with 4 minutes. You can take 1-2 minutes. Check your book. Shuffle the pages. कहीं doubt exist हो रहा है तो पूछ लो. Otherwise, then we wind up the class.
तेरा हो गया हाँ जी बच्चा. चार्ट So okay जी, I hope you are okay with today's class. कोई ज़्यादा doubt नहीं है. Isha is saying no doubt. Dilpreet no doubt. Navjot no doubt. Okay जी. Thank you so much. Keep studying. कोई doubt आता है, you are most welcome. Kindly send your message. Fine, let me know if there is any doubt. Thank you. Take care of yourself. Bye bye. एमरजेंसी